So this is orientation lecture for Introductory Microeconomics, semester 1 economics honors students. Now in this orientation lecture, first of all obviously I will be explaining the course content, what is the revised syllabus, and what will be the approach of entire economics honors, because we study economics honors in Delhi University with a different approach as compared to the other universities. The approach here will be more numerical oriented and application based rather than purely a theoretical paper. So I will briefly explain the course content part first, then how we will be conducting the lectures. So in the first lecture itself you will be knowing what is the meaning of when we say application and numerical oriented paper. I will show the question paper also from the previous year question. रीडिंग का डिस्क्रिप्शन होना है, रीडिंग के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एंड रीडिंग के बैक के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कैसे मिलना है, हाउ टू अप्रोच दैट पार्ट एज वेल, एंड हाउ टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर, देन हाउ टू अप्रोच अ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, and how to attempt a numerical question. So all three part, that is theoretical, application and numerical, will become clear in the first orientation lecture itself. So first of all, see the content and the new revised reading list. Now the content for introductory microeconomics, you can see, and these things are available on the school site also, the revised reading list for 2024. There are 4 units. Unit number 1 is a introduction to economic trade-off. Within that introduction to economic trade-off there are 3 chapters, chapter number 1, 2 and 3 from ManQ. Second part will be how market works. So market will work basically through the market mechanism, and market mechanism is demand and supply. But to explain that how market will work, chapter number 4, chapter number 5, chapter number 6, 7 and 9, 5 different chapters are there. So second unit will explain how market will operate. Third unit will basically explain the role of government, and which will highlight when market will not operate. So when market will fail. So when market will fail, there will be a role of the government. So market will fail in the case of externalities, market will fail in order to provide public good. So then you can justify the role of the government. So unit number 3 is role of government, and 4th unit is just introducing you about a game theory part, which is a individual decision and interaction. So that is a minor unit, you can say. Mainly it is unit number 2 and unit number 3. The main content is unit number 2 and unit number 3. And the relative weightage for those units: first unit 15 marks, second unit 30, third unit 25, and unit number 4 20 marks. Clear? So you can just write it, all those information on the first sheet, that what are the various chapters we have to cover here, and in which order we will be doing it. So first is the content part or reading list. So according to the reading list there are 4 different units. Just write it. Unit number 1 is introduction to economic trade-off. Unit number 1 is introduction to economic trade-off. Introduction to economic trade-off. And within that introduction to economic trade-off, chapter number 1, 2 and 3. Third chapter is main actually, which is explain interdependency and gain from trade. So gain from trade, that means in terms of exporter, importer, what is the gain for exporting country, what is the gain for importing country, what is the gain from international trade, what will be the impact of import tariff. So all those things will be explained mainly in chapter number 3. So chapter number 1, 2 and 3, ये 3 chapters refer करने हैं from ManQ.
each chapter के end में there are some review questions and there are problem and exercises. Review question are basically theoretical, exercise वाले जो question है उसका approach application और numerical oriented है. Then unit number 2, second unit is how market works. And when I say how market works, you are basically explaining how competitive market works, how a perfect competition market works, because market के भी अलग अलग concept हैं. Market can be competitive, market could be monopoly, market could be oligopoly, market could be monopolistic. So when we say how market works, then automatically we are referring to which market? It is a competitive market. So how a competitive market is working, that will be explained by or explained through different chapters. Chapter number 4, 5. Chapter number 4 will simply explain demand supply basic information. When demand curve will shift, when supply curve will shift, how to draw the demand curve and so on. Chapter number 5 will be basically explaining the price elasticity of demand and price elasticity of supply. So the concept of elasticity of demand and elasticity of supply will be there in chapter number 5. Then chapter number 6 will be dealing with the supply, demand and government policies. Government policy like if government will be imposing control on the price in the form of price ceiling or price floor, then how that price ceiling and price floor will affect the market. So we have to explain things according to the some real example like रेंट कंट्रोल एक्ट हो गया या मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है या मिनिमम वेज लॉ होता है, तो उसका इम्पॉर्टेंस या इफेक्ट क्या होगा फॉर द मार्केट. देन चैप्टर नंबर 7 will basically deal with the consumer surplus, producer surplus and efficiency of the market. A competitive market is said to be efficient. So what is the meaning of that? When I say that market is efficient, so efficiency has to be defined. So chapter number 7 will be related to consumer surplus, producer surplus, and then chapter number 9 here. Chapter number 9 is basically again the application of international trade. So 4, 5, 6, 7 and 9 again from ManQ. And then you move to unit number 3. Unit number 3 is a role of government. So here we explain the how market will work. In next unit we explain when market will not work. So market will not work in the case of externality, market will not work in the case of provision of public good, which justifies the role of government. So role of government. Within that role of government you have to refer chapter number 8, 10 and 11. 8, 10 or 11 again from ManQ. 8, 10 or 11 from ManQ. So in fact you are reading from ManQ chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or 11. First to 11 chapters. So 11 chapters from ManQ, and the last unit is unit number 4 is individual decision and interaction. Individual decision and interaction. In that individual decision and interaction, just chapter number 1 and 2 may only up to section 2.5. Chapter number 1 and 2 may up to chapter number 2.5 section, and reference is दीक्षित. ठीक है, ये 4 units हैं for introductory microeconomics. The main content, again I repeat, is unit number 2 and unit number 3. That will consume bulk of your time. So bulk of time will be devoted for unit number 2 and 3. So we will start basically with unit number 2 and 3 collectively, because there are some linkages also. So
वी कैन से चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 4 टू चैप्टर नंबर 11 एक ब्लॉक में आप पढ़ेंगे। और इस ब्लॉक का मतलब हो गया यहाँ पे वेटेज के फॉर्मेट में, जस्ट सी दैट वेटेज माइनट्स में गिवन है लास्ट के अंदर। यू कैन राइट इट 15, 30, 25 और 20। तो सेकेंड और थर्ड यूनिट इज कंबाइंड 55 मार्क्स, 15, 30, 25, 20। You can write the weightage here for unit number 1, 15. This is 35. What was that? 30 in fact. 15, 30, 25 and 20. एंड 20। ठीक है, ये पेपर का कंटेंट हो गया इंट्रोडक्टरी माइक्रो के लिए। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उस पेपर के पैटर्न को अगर आप फॉलो करें, ऑल्दो इट इज़ रिटन दैट द डिवीजन इज फ्लेक्सिबल एंड देयर कैन बी सम वेरिएशन, बट ब्रॉडली यू कैन एक्सपेक्ट दिस वेटेज। एंड इन द पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7। तो पेपर आई विल शो दैट क्वेश्चन, कैन सी दैट माइक्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2023, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर प्रिंट एंड टाइप कॉपी अपलोडेड आपको ई बुक वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, स्कैन कॉपी है। तो इंस्ट्रक्शन में याद रखिएगा, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, दैट मीन्स विदाउट एनी सेक्शन, एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सो 5 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 18 into 5 90 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, बट इन एवरी क्वेश्चन देयर विल बी वेरियस सब पार्ट्स। सो वेरियस सब पार्ट्स लाइक अबाउट 3-4 सब पार्ट्स एज यूजुअल रहेंगे। तो 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के अंदर 3-4-5 पार्ट्स अगर हैं, दैट मीन्स अराउंड 15-20 क्वेश्चन आपको वहाँ पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? एंड द नेचर ऑफ दोज क्वेश्चन यू कैन सी, आई सेड इट विल बी एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी देयर आर सम इंफॉर्मेशन numerically given. It is not the question like explain this or describe this. The question will be mainly in the nature of calculate it or find this number. So those questions will be basically there, and you can see that there are many questions which will have a numerical orientation. That means some type of function will be given to you, equation will be given to you, and from that equation we have to calculate. We have to calculate like we will solve this question in this first lecture itself. If a demand and supply function is given and if government imposes a tax, then how the tax will affect the price paid by the buyer and the price received by the seller, and calculate the deadweight loss amount. So in every question you will be having a numerical question, application based question, and obviously a theoretical question also. तो हर क्वेश्चन के अंदर जैसे, बिकॉज आई सेड देयर विल बी 3 or 4-5 पार्ट्स ऑफ द एवरी क्वेश्चन। तो जो 4 or 5 पार्ट्स क्वेश्चन के होंगे उसमें क्वेश्चन का नेचर एप्लीकेशन ओरिएंटेड लिया होगा, न्यूमेरिकल होगा, एज वेल एज थ्योरी होगी। So it will become clear in this lecture. So we can start basically with the unit number 2 and 3 combined. I will prefer. So you can write unit number 2 and unit number 3. Unit number 2 and unit number 3. And for that write chapter number 4, 5, 6, 7 and 9. ये यूनिट नंबर 2 के लिए, एंड चैप्टर नंबर 8, 10 and 11 यूनिट नंबर 3 के लिए। क्लियर? तो किसी पर्टिकुलर चैप्टर की हेडिंग नहीं डालनी है, विल
continue with, because there are some concepts which are linked. So I will just go through with this one chapter to the other chapter, but you will find a continuity in that. So don't specifically mention that we are studying in this lecture chapter number 8 or chapter number 7 or chapter number 9. Just start with the basic concept here. As I said, that chapter number 4 will be explaining demand and supply. Chapter number 5 will be basically explaining the elasticity of demand and supply. And then chapter number 6 will be basically explaining how government control in the form of price ceiling and floor. 7 will explain consumer surplus, producer surplus, and then application of international trade. So start with the first concept, which is relevant, is elasticity of demand. Elasticity of demand. So whenever you use the word elasticity of demand, elasticity actually means responsiveness. So elasticity measures responsiveness of demand due to change in either price of commodity or price of related commodity or income of consumer. Because demand depends upon price, demand depend upon income, demand also depend upon price of related good. In fact, demand also depend upon taste and preference and so on. So when you say quantity demanded, like for example, if I write quantity demanded of good X is a function of price of that commodity, it could be in function of income of consumer, it could be function of price of related commodity like good Y. So X का जो price demand होगा, that will depend upon price of X, income, price of commodity Y, it also depend upon other factors. But elasticity के लिए ये factor important है हमारे लिए for the elasticity of demand concept. So when you use the term elasticity, elasticity I said it measures a responsiveness. It is responsiveness of demand. So elasticity measures the responsiveness of demand due to change in price of commodity, income of consumer, and price of related commodity. Accordingly, we have three different type of elasticity. One is called price elasticity of demand. Second will be called as income elasticity of demand. And third is called cross price elasticity of demand. Cross elasticity. Cross in the sense we are examining that effect on demand for X because of change in price of Y. So if you have to just define this term elasticity, how you can define this term? Elasticity of demand measures degree of responsiveness in quantity demanded due to change in either A, price of that commodity, B, income of consumer, and C, price of related commodity. So you can just write it down. Okay, I will be just explaining the concept, but everything will be dictated also, so that you will have a well prepared write up in your register. So write down the definition for elasticity of demand first. Elasticity of demand is a numerical measure of elasticity of demand is a numerical measure of degree of responsiveness in quantity demanded, due to change in, now you can mark point A, price of that commodity, B, income of consumer, and C, price of related commodity. Next paragraph. Accordingly we have three different types of elasticity of demand. Number one, price elasticity of demand
second income elasticity demand, and third cross price elasticity demand. Price elasticity, income elasticity, and third cross price elasticity demand. So we have to explain in fact all three, but start with the first one, price elasticity demand. So now you can mark the specific heading of price elasticity demand. Now define this term, price elasticity demand. It is a numerical measure of degree of responsiveness. It is a numerical measure of degree of responsiveness in quantity demanded due to change in price of that commodity, after comma, keeping all other factors constant. अब इसे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इलास्टिसिटी के लिए ये लिखा है, पी सबस्क्रिप्ट में प्राइस इलास्टिसिटी डिनोट कर रहा है. सो प्राइस इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो परसेंटेज चेंज के लिए यू कैन राइट डेल्टा क्यू अपॉन क्यू into 100 divided by delta p upon p into 100. 100 cancel out हो गया. This is delta q upon delta p into p by q. So price elasticity demand is actually this, but we add minus sign in this formula to make it positive because price और quantity का relationship inverse है. तो either delta q और delta p इन दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा. But we can prove in this lecture that elasticity or demand is always positive. It always varies between 0 to infinity. It means it is always positive. So in order to make it positive, you add minus sign in the formula itself. So elasticity or demand is actually delta q by delta p into p by q. इसे अगर आप यूज कर रहे हैं मैथमेटिकली तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इज एक्चुअली चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. सो मैथमेटिकली इट इज डी क्यू बाय डी पी. डिमांड के फंक्शन को प्राइस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डिमांड को प्राइस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है. तो व्हेन यू डिफरेंशिएट दैट डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, देन इक्वेशन कुड बी रिटन एज, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज प्राइस इलास्टिसिटी इज माइनस डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाई क्यू, डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाई क्यू. सो गिवन एनी डिमांड फंक्शन वी कैन इजिली कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज ये क्वेश्चन पेपर के अंदर भी है. इफ अ डिमांड फंक्शन इज गिवन टू यू लाइक इट इज गिवन एज 100 माइनस 5p एंड क्वेश्चन सेज फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 5. तो 5 के प्राइस पे मुझे इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट करनी है. वेन एवर क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला माइनस डी क्यू बाई डी पी into p by q. So you have given this number p is given to you. If you substitute that p there in function, you will get the quantity demanded. और सिर्फ आपको dq by dp फाइंड करना है सेपरेटली. तो dq by dp कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से पहले. तो what will be the derivative? dq by dp will be equal to what? माइनस 5, 100 माइनस 5p है और इलास्टिसिटी में इसको सब्स्टिट्यूट कर देना. माइनस 5 प्राइस की जगह लिखा 5 और प्राइस अगर 5 पुट कर देते हैं तो 25, 100 माइनस 25 इज 75. सो इट विल बी 25 बाई 75 1/3. इलास्टिसिटी डिमांड इज 1/3. ठीक है. तो इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन एनी डिमांड फंक्शन. सो फ्रॉम गिवन एनी डिमांड फंक्शन वी कैन इजिली कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट. ठीक है. Now one thing more you can note from here is
when we find elasticity, we have written it is delta Q by delta P into P by Q. Now delta Q by delta P is said to be the slope of demand curve. मतलब अगर आप डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे, एक्सेस पे यू विल राइट प्राइस एंड क्वांटिटी. तो जब लाइन का स्लोप मुझे कैलकुलेट करना होगा तो स्लोप इज एक्चुअली व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस या डी वाई बाई डी एस कह लो, ज्योमेट्रिकली परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल एक्सेस प्राइस और ये क्वांटिटी होगी. तो व्हेन यू कैलकुलेट स्लोप, स्लोप हो गया डेल्टा P बाय डेल्टा Q, बट हमने इलास्टिसिटी में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा Q बाय डेल्टा P, विच मीन्स इट इज़ 1 अपॉन स्लोप इंटू P बाई Q. 1 अपॉन स्लोप इंटू P बाई Q मतलब इलास्टिसिटी स्लोप का इन्वर्स है, बट इलास्टिसिटी सिर्फ स्लोप का इन्वर्स नहीं है, इंटू P बाई Q भी है. तो अगर आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हो इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे प्राइस 0 हो जाएगा. तो प्राइस अगर 0 हो गया मतलब आप P की जगह 0 पुट कर दोगे. तो प्राइस अगर 0 पुट करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 होगी. इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी 0 होता है. और इस पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्वांटिटी 0 हो गया. आप Q अगर 0 करेंगे तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0. इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी इन्फिनिट हो गया. मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी वेरी करती है. इट वेरीज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी वेरीज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी. और इलास्टिसिटी का स्लोप से इनवर्स रिलेशन, इसका मतलब स्लोप ज़्यादा होगी तो इलास्टिसिटी कम. मतलब अगर आपने लाइन को वर्टिकल बना लिया है, सो इफ़ यू ड्रॉ अ वर्टिकल डिमांड कर्व और इफ़ यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिट हो गया तो वहाँ इलास्टिसिटी 0 है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 है तो वहाँ इलास्टिसिटी इन्फिनिट है. Because elasticity varies inversely with the slope. It varies inversely with slope. तो जब लाइन आप वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो इलास्टिसिटी की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिट है. तो जस्ट रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इलास्टिसिटी वेरीज इनवर्सली विद द स्लोप. For a vertical line, since slope is infinite, so elasticity will be 0, and for a horizontal line, since slope is 0, therefore elasticity will be infinite. And elasticity number varies between 0 to infinity, which means it will always be positive number. तो ये एक बेसिक स्टेटमेंट है, कंसेप्ट है, जिसको आप थ्रू आउट इकोनॉमिक्स ऑनर्स फॉलो करोगे एंड आफ्टर दैट एज वेल. तो इलास्टिसिटी इज बेसिकली अ कंसेप्ट which measure degree of responsiveness in quantity demanded due to change in price or income or price of related commodity. अब इस लेक्चर में करना क्या, we have to basically explain the application side of it. What is the application of this concept? I said question का nature theoretical है, application है और numerical है. तो now I will explain the application of elasticity of demand. Elasticity of demand के application concept को explain करना है. So up to this I just write down few important sentence which I will say, just 1 or 2 point. Price elasticity of demand varies inversely with slope of demand curve. And second, price elasticity varies between 0 to infinity. Between 0 to infinity. ठीक है, अब इस concept से we will continue with the application part and the numerical part. Now the application of elasticity of demand, application as well as the numerical part. So just write the heading, the concept of application elasticity and its application. So application of elasticity. Application of elasticity means when we explain this concept, elasticity of demand, you know that it is a degree of responsiveness in quantity demanded due to change in price, and elasticity is measured by 1 upon slope into P by Q. अब उस टॉपिक को आप अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकल और रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर. सो वन एप्लीकेशन ऑफ elasticity of demand has been explained in the form of incidence of tax. Incidence of tax. The word incidence actually imply burden. So we are explaining the burden of tax, and
Actually we are referring to the burden of quantity tax. Tax can be imposed in different form, but in this chapter we are referring to the quantity tax. Quantity tax means it is a specific tax. A specific tax. For example, if I say that tax is 10 rupees per unit, it is 10 rupees per quantity. That means every quantity that will be sold, you have to pay a tax of 10 rupees. It is not 10%, it is 10 rupees. If I say 10%, then it is called as the ad valorem tax, percentage tax. But here it is quantity tax that we are referring to. So we are actually referring to the burden of or incidence of the quantity tax. It means who will bear the burden, buyer or the seller, or whether both will bear the burden. If both will bear the burden, in what proportion they will bear the burden. So the burden of tax has to be explained here. Now to explain the burden of tax, obviously we have to compare two things. One, what happens before tax and what happens after tax. How much price is paid by buyer before tax, how much price is paid by buyer after tax. That will indicate the burden, that monetary burden on buyer. How much is the price received by seller before tax and how much is the price received by seller after tax. So we are basically comparing two different conditions. One is before tax, another is after tax. So before tax, when we determine the price in the market, so that unit is how market works. So market is working from, by the market equilibrium will be attained where demand is equal to supply. You can consider some type of example like if I say that quantity demanded is equal to 300 minus P, तो क्वांटिटी डिमांडेड को आप ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकते हो. प्राइस ज़ीरो करेंगे तो क्वांटिटी 300. सो इफ़ यू राइट प्राइस ज़ीरो, क्वांटिटी विल बी 300. सो व्हेन यू ड्रॉ द डिमांड का, यू राइट हियर प्राइस एंड हियर क्वांटिटी. सो व्हेन प्राइस विल बी ज़ीरो, क्वांटिटी विल बी 300. एंड व्हेन क्वांटिटी विल बी ज़ीरो, देन प्राइस विल बी 300. 300 और 300 का पॉइंट स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लिया. दिस इज द डिमांड कर्व. And if supply curve is like given as 2p, मतलब price zero करेंगे तो quantity will also be zero, which means it will start from origin. Starting from origin, as price rises, quantity supplied will increase. Supply curve. Their equality will determine the market equilibrium. So just find the market equilibrium. So market equilibrium requires that demand is equal to supply. Quantity demanded equal to quantity supplied. It means 300 minus P is equal to 2P. Therefore, 3P is equal to 300. Price will be equal to 100. So this market price is 100. And if I substitute that price in any either demand or supply curve, तो demand या supply curve किसी भी equation में अगर आप put कर दो price की जगह 100, then you will get quantity of 200. So this is a प्राइस एंड क्वांटिटी विदाउट टैक्स. अभी तक विदाउट टैक्स है. तो विदाउट टैक्स बायर इज पेइंग अ प्राइस ऑफ 100, सेलर इज रिसीविंग अ प्राइस ऑफ 100 एंड क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट इज इक्वल टू 200. दिस इज विदाउट टैक्स. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन आफ्टर टैक्स. सो व्हेन वी एक्सप्लेन आफ्टर टैक्स, देयर हैज टू बी सम imposition of tax. So when we discuss it after tax, just see it in the rough part first. Suppose a tax of rupees 30 is imposed per unit. टैक्स 30 का इम्पोज किया पर यूनिट. तो अगर टैक्स 30 का इम्पोज किया पर यूनिट, देन व्हाट विल बी द प्राइस पेड बाय द बायर एंड द प्राइस पेड रिसीव्ड बाय द सेलर, वी हैव टू डिटरमाइन. बट पहली बार टैक्स अगर इम्पोज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होना है. इफेक्ट विल बी दैट इफ दिस इज द सप्लाई कर्व विदाउट टैक्स, supply curve actually explain the relation between price and quantity supplied. So if I say that at a price quantity 1, price will be say 2. Consumer is willing to sell one producer is willing to sell one quantity
at a price of 2. If you have to pay a tax of 30 rupees, so seller will be now willing to sell the same quantity at a price of 32, which means supply curve will be passing through this point of 32. So the gap between these two supply curve, this is supply curve after tax, the gap between these 2 points will be equal to the size of tax. ये टैक्स साइज के बराबर से लाइन शिफ्ट हो जाएगी. टैक्स साइज कैन बी 3, it can be 5, it can be 10, it can be any number. So when tax will be imposed, the supply curve will shift up, and it will shift up by the size of tax. Now if supply curve shifts up by the size of tax, then there will be a new market price. We have to find that new market price. So just apply this information in the market equilibrium diagram. Prices are not determined only by the seller. Prices are determined by the seller and buyer both in the market. So if you have to explain after tax what happens, then this will be the diagram after tax. First was demand and supply curve. This was 300. Market price without tax was 100. Quantity was 200. If tax is imposed, then after imposition of tax, supply curve will shift up by the size of tax. तो टैक्स के साइज से सप्लाई कर्व को अपसाइड शिफ्ट कर देंगे. Now what will be the new market price? New market price will be determined by equality of supply after tax with demand. So this will be the new market price, and this gap between supply curve will be the size of tax. ये टैक्स साइज है. टैक्स का साइज ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस हो गया 30. प्राइस का ग्रोथ अगर पूछा जाए, इंक्रीज पूछा जाए, तो आप 100 ऑनवर्ड्स कैलकुलेट करोगे. तो व्हाट वी फाइंड दैट प्राइस हैज गॉन अप, but increase in price will be counted only this distance. Tax size will be counted as the complete, but increase in price is only this gap, which means price has increased but not equal to the size of tax, which means full burden is not shifted on the buyer. अगर टैक्स 30 का लग रहा हो, प्राइस ओनली 20 से बढ़ रहा हो, तो ओनली 20 रुपीज बर्डन हैज बीन शिफ्टेड ऑन द बायर, द रेस्ट 10 रुपीज बर्डन विल बी ऑन द सेलर. But if tax is 30 and price gone up by 30, then entire burden will be shifted on the buyer. So in this case, what you find that the size of tax is more, but the increase in price is less, which means complete burden has not been shifted on the buyer. This is the new market price which will be paid by the buyer. We will calculate it, but just mark it here PB, price paid by the buyer. But the price paid by the buyer will include the tax also. Now this is the price which is paid by the buyer inclusive of tax. तो जब आप price pay करते हैं किसी product का, mentioned है it is inclusive of tax. So as a buyer we pay price including the tax, but we are not paying tax to the seller. We are paying tax to the government. It will go to government through seller. That is what is called indirect tax. Indirectly it will be passing to the government through seller. So once you pay the tax, the seller will receive a lower price, and this is the quantity after imposition of tax. So we will calculate it, what is PB, PS and quantity after tax. But the point to note is that there is a burden on buyer, there is a burden on seller. Burden on buyer will be this increase in price, and burden on seller will be this lower price received by the seller. But who will bear the larger burden or lesser burden? That depends upon elasticity of demand. तो यहाँ से elasticity का application हो गया ये. Just remember this formula. Buyer's burden upon seller's burden. Buyer's burden upon seller's burden is equal to elasticity of supply upon elasticity of demand. Buyer burden upon seller burden is equal to elasticity of supply by elasticity of demand. Just remember or learn this equation. From this equation, 4 relations follow actually. 1. Burden on buyer will vary directly with elasticity of supply.
burden on seller will vary directly with elasticity demand, burden on buyer will vary inversely with elasticity demand, and burden on seller will vary inversely with elasticity supply. That means दोनों न्यूमरेटर का डायरेक्ट रिलेशन, both denominator direct relation, and otherwise it will be, if you cross, then it will be an inverse relation. So this equation actually implies that the burden on buyer varies directly with elasticity of supply, which means greater will be elasticity of supply, greater will be the burden on buyer. Less will be elasticity of supply, less will be the burden on buyer. So 0 will be the elasticity of supply, 0 will be the burden on buyer. 0 burden on buyer means complete burden will be on seller. So when we can have complete burden on seller, when elasticity of supply will be 0. Similarly, elasticity of demand and seller burden vary directly. Greater is elasticity of demand, greater will be the burden on seller. Less is elasticity of demand, less burden on seller. 0 elasticity of demand, 0 burden on seller. That means if elasticity of demand will be 0, there will be no burden on seller, full burden will be on buyer. So there are situations when there can be complete burden on buyer or complete burden on seller, but if you say that elasticity of demand or supply is 0, तो 0 का मतलब हो गया कि आप इलास्टिसिटी डिमांड कर्व का जो शेप होगा, इलास्टिसिटी डिमांड 0 का मतलब है डिमांड का वर्टिकल बनना चाहिए. तो अगर इलास्टिसिटी डिमांड 0 है, देन डिमांड का यू हैव टू ड्रॉ वर्टिकल, और इलास्टिसिटी डिमांड अगर इनफाइनाइट है तो हॉरिजॉन्टल है. बट अनलेस अगर हमने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं बना रखा, दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग इलास्टिसिटी एज 0 और इलास्टिसिटी एज इन्फिनिटी. So since we have not drawn demand curve or supply curve as vertical line, which means we are not taking elasticity of demand or elasticity of supply as 0, therefore the burden is being shared by buyer and seller both. There could be complete burden on buyer or seller if elasticity of demand is either 0 or infinite. But if elasticity is not 0 or infinite, the burden will be shared by both. And in which proportion they will share the burden? They will share the burden in the proportion of elasticity of supply upon elasticity of demand. So this point is basically important one, and if you have to elaborate it further, we can take various help of various diagram. Like suppose if I try to establish one relation that buyer burden varies inversely with elasticity of demand. So if you are showing that buyer's burden varies inversely with elasticity of demand, so what you will do in this case, you will draw two different diagram और जैसे elasticity of demand का difference रखना. That means in one diagram draw steeper, in the other draw it flatter. और elasticity कहाँ पे कम या ज़्यादा होगी? Elasticity varies inversely with slope. Steeper will be the line, that means more is the slope, elasticity will be less. Flatter will be the line, less is slope, more will be elasticity. So this is inelastic and that one is elastic. Keep all other factors same now. All other factors same means I will draw a supply curve almost parallel to each other. मतलब supply curve के slope में फर्क नहीं किया, सिर्फ demand curve के slope का फर्क है. And intersection determine price and quantity. And when tax will be imposed, then after the imposition of tax, supply curve will shift up by the size of tax. दोनों केस में supply curve का shift same रखना है. That means the vertical gap you have to keep same in both diagram. So this is supply curve after tax, and this was before tax. This higher price is the price paid by buyer, but tax size is this. So buyer burden in this diagram will be this amount. Right side वाले diagram में price increase is less, which means the burden on buyer will be less here, and the burden on seller will be more here. Seller का burden ये lower area हो जाएगा. This is price for seller, price for seller.
So actually this diagram also explains that the seller's burden varies directly with elasticity demand. सेलर का बर्डन और इलास्टिसिटी डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर आप इलास्टिसिटी या डिमांड वैरी करोगे तो बर्डन बायर और सेलर का डिफरेंट होता जाएगा. एंड इफ यू टेक एनी एक्सट्रीम कंडीशन लाइक extreme situation like elasticity of demand equal to 0. When you draw elasticity of demand 0, then demand curve is vertical. With vertical demand curve, then draw the supply line. This is demand and supply. Intersection determine the price. Now impose tax. So when tax is imposed, the supply curve will shift up. But now what we find that increase in price and the tax size both are same, which means full burden on buyer. So this is the case where complete burden is on buyer, complete burden buyer पे. तो जब elasticity या demand 0 हो जाएगा, then full burden will be on buyer. Elasticity demand 0 actually means that whatever be the price, consumer will buy that commodity. Demand is vertical. So at any price consumer will buy it. Therefore, knowing that at any price consumer will buy it, seller will push the complete burden on the buyer. और अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन में इलास्टिसिटी और डिमांड को अगर परफेक्टली इलास्टिक ले लें, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन ड्रॉ द सप्लाई कर्व. This is the quantity and price. Now when supply curve will shift after tax, market price पे कोई फर्क नहीं है. The market price remains same. So there is no burden on the buyer. In fact, only seller will receive a lower price. The complete burden is on seller. ये price received by seller कम हो जाएगा. Complete बर्डन ऑन सेलर. तो अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन लेंगे तो फुल बर्डन बायर और सेलर पे होता है. अब क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ टू कैलकुलेट इट, मतलब अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिए जाएं तो हाउ यू कैन कैलकुलेट इट न्यूमेरिकली. कैलकुलेट करने के लिए देयर आर सम क्वेश्चंस. वन क्वेश्चन इज गिवन एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 8 और एक आई विल बी जस्ट सॉल्विंग 2 क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आप रीडिंग के बैक का कर लो और सेकंड क्वेश्चन जो पास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है. सो दैट यू विल बी एबल टू रिलेट कि जो रीडिंग आप पढ़ रहे हैं और उसका एग्जामिनेशन के साथ क्या लिंक है. तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट चैप्टर नंबर 8 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10. चैप्टर नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 10 है. तो हर चैप्टर के अंदर बेसिकली देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस गिवन एंड दिस क्वेश्चन से दैट फंक्शन वही है जो अभी हमने यूज़ कर रखा है. क्वांटिटी डिमांडेड इज 300 माइनस पी एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 2p एंड देन इट सेज टैक्स साइज इज t पर यूनिट. आप t की जगह कोई नंबर ले सकते हो आप, बट उस क्वेश्चन में t गिवन है. टैक्स साइज t पर यूनिट, इट कैन बी 10, इट कैन बी 30, इट कैन बी एनी नंबर. So you have to calculate, find price and quantity before tax. तो before tax तो हमने calculate कर लिया. First part we have already solved that. Price is 100 and quantity is 200. Second is find price paid by buyer, price paid by buyer and price received by seller and quantity after tax. मतलब PB, PS और क्वांटिटी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना.
अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपने ऑलरेडी बिफोर टैक्स सॉल्व कर रखा, आफ्टर टैक्स वाला पॉइंट सॉल्व करना है. तो जस्ट सी दैट सॉल्यूशन. So given that demand function QD equal to 300 minus P and QS equal to 2P, we have done up to this. Intersection determine price as 100, quantity as 200. This point was 300 and 300. Now just solve it after tax. Remember what happens after tax is that we will, due to tax can be imposed on buyer, it can be imposed on seller. Imposition का मतलब है who will have the legal responsibility to pay the tax. But independent of that, the burden of tax होगा वो दोनों शेयर करेंगे. मतलब उससे हमारे आउटकम पे फर्क नहीं पड़ता. It can be imposed on buyer, it can be imposed on seller. So in both case actually what will happen that there will be a gap. मैन क्यू में इसे कहा गया टैक्स वेज है. इट बेसिकली क्रिएट अ टैक्स वेज. वेज मीन्स गैप बिटवीन द प्राइस पेड बाय बायर एंड द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर. अगर ये टैक्स सेलर पे लग रहा है तो एक्चुअल में सप्लाई कब यहाँ से क्रॉस कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से सप्लाई कब शिफ्ट हो गया. और अगर ये बायर पे लग रहा है तो एक्चुअल में डिमांड कब शिफ्ट हो गया, इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट. But in both case the outcome will remain same. This is the price paid by buyer, we have to find it. This is the price received by seller, we have to calculate it. And this is after tax. But one thing we will find that tax के बाद buyer को ज़्यादा price pay करना है and seller will be receiving lower price. So just remember that buyer will pay more price. So what you can do, you can write a new डिमांड फंक्शन. और न्यू डिमांड फंक्शन में क्या करें, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे इस पे, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 300 माइनस पी वाज गिवन ओरिजिनली. नाउ सिंस बायर विल हैव टू पे मोर प्राइस, तो प्राइस में टैक्स के अमाउंट को ऐड कर दीजिएगा, वट एवर बी दैट नंबर. अब यहाँ पे अगर लिखा होता 300 माइनस 2P, तो मैं क्या लिखता, 300 माइनस 2 लिखता और ब्रैकेट में P प्लस टी लिखता. ठीक है, इट इज़ 2P प्लस टी नहीं, 2 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर P प्लस टी, मतलब प्राइस में आपको टैक्स ऐड करना है. और अगर ये टैक्स सेलर पे लगा हुआ है देन यू कैन चेंज द सप्लाई कर्व. और सप्लाई कर्व को चेंज करके क्या कर सकते हैं हम, सप्लाई कर्व गिवन है 2P, देन यू कैन राइट सेलर के लिए प्राइस कम होना है तो यू कैन राइट 2 एंड विद इन ब्रैकेट P माइनस टी. बट दोनों काम एक साथ नहीं करना है, यानी कि हमने डिमांड भी चेंज कर दिया, सप्लाई भी. इट कैन बी इम्पोज आइदर ऑन बायर और ऑन सेलर, किसी एक पे ऊपर इम्पोज होगा वो. तो गिवन दिस न्यू डिमांड फंक्शन, नाउ अगेन कैलकुलेट द मार्केट इक्विलिब्रियम. सो व्हेन वी कैलकुलेट द मार्केट इक्विलिब्रियम इट विल बी डिमांड इक्वल टू सप्लाई 300 माइनस P प्लस T इज इक्वल टू 2P. ठीक है, इस नए डिमांड फंक्शन को सप्लाई से इक्वेट कर देंगे एंड देन सॉल्व फॉर P, फिर प्राइस के लिए सॉल्व कर लो. सो दैट विल बी 300 माइनस P माइनस T इज इक्वल टू 2P. सो दिस विल बिकम 3P इज इक्वल टू 300 माइनस T. सो प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस T बाई 3. 100 माइनस T बाई 3. अब टैक्स से पहले जो प्राइस है वो 100 है और ये नंबर आ रहा है 100 माइनस T बाई 3, मतलब लेस देन 100. तो प्राइस विल डिक्रीज फॉर द सेलर, सो दिस मस्ट बी द प्राइस फॉर सेलर. जब आप P कैलकुलेट करेंगे तब तो आपको इंटरप्रेट करना है कि ये प्राइस किसके लिए कैलकुलेट किया हमने, सेलर का या बायर का. तो दिस इज प्राइस फॉर सेलर. विच मीन्स यू हैव कैलकुलेटेड दिस नंबर 100 माइनस T बाई 3. तो व्हाट विल बी दिस नंबर, बायर के लिए प्राइस क्या हो जाएगा, बायर के प्राइस में और सेलर के प्राइस में जो गैप होता है वो टैक्स साइज का होता है. तो सेलर के प्राइस में टैक्स का साइज आप ऐड कर दो, टैक्स साइज T है. देयरफॉर प्राइस फॉर बायर विल बी इक्वल टू व्हाट, बायर का प्राइस लिखेंगे तो सेलर प्राइस 100 माइनस T बाई 3 प्लस T कर देना है. सो दिस विल बिकम 100 प्लस 2T बाई 3. दिस विल बी द प्राइस फॉर सेलर.
ये सेलर का सॉरी बायर का प्राइस हो गया. दिस इज प्राइस फॉर बायर, दिस इज प्राइस फॉर सेलर. 100 minus t by 3 for seller, 100 plus 2t by 3 is for buyer. And how much will be the quantity? सिर्फ एक पॉइंट ये निकालने को रहेगा, क्वांटिटी. क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए यू कैन कैलकुलेट दैट क्वांटिटी आइदर फ्रॉम द डिमांड कर्व और फ्रॉम द सप्लाई कर्व. बट अगर सप्लाई कर्व से फाइंड करो तो सेलर का प्राइस यूज़ करना है, डिमांड कर्व से बाई करें तो बायर का प्राइस यूज़ करना है. ठीक है, बी अलर्ट देयर. So if you calculate from the supply curve, then supply curve given as 2p. So I write here q equal to 2p. और अब p की जगह कौन से वैल्यू पुट करेंगे? इन दोनों दो प्राइसेस हैं यहाँ पे. सेलर का सप्लाई फंक्शन लिया है तो आप सेलर का प्राइस कंसिडर करोगे 100 minus t by 3. So it is 2 into 100 minus t by 3, which means it quantity will be 200 minus 2t by 3. क्वांटिटी 200 से डिक्रीज होकर के 200 माइनस 2t by 3 हो जाएगा. क्लियर? तो बस एक स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है. पेपर के अंदर कोई वैल्यूज़ गिवन हो सकती है जहाँ पे t के टर्म में आया है, और इसी कंसेप्ट को जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो रिमेंबर सिंस यू हैव कैलकुलेटेड ऑल द नंबर्स, यहाँ जो एरिया आ रहा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल टैक्स का डेड वेट लॉस कहलाएगा. आई विल एक्सप्लेन दैट डेड वेट लॉस बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट? रिमेंबर, तो अगर आप न्यूमेरिकली इसी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिया तो बेस एक्चुअल में ये गैप हो जाएगा जो टैक्स साइज है, और हाइट क्वांटिटी का डिफरेंस हो गया. एक नंबर 200 है और दूसरा नंबर 200 माइनस 2t by 3. सो यू कैन कैलकुलेट इट द डेड वेट लॉस ऑल्सो. सो देयर विल बी जनरली इन अ पेपर व्हेन फंक्शन विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस पेड बाय बायर, price received by seller, quantity after tax, dead weight loss, these things you have to calculate, and this is a regular question. मतलब every year you will be getting that question. कभी 8 मार्क्स का होगा, कभी 10 मार्क्स का होगा, कभी 6 मार्क्स का होगा, but usually this question is there. तो one question is there in chapter number 8, question number 10 you have done. Now related with the past year question. So in the past year, last year this question was, you can just mention that past year question of 2023. ठीक है, just see that question. ठीक है, क्वेश्चन 2023 का है. इसकी टाइप जो कॉपी होगी वो अपलोड हो जाएगी लेटर ऑन, बट यू कैन यूज दिस पार्ट. मतलब based upon this first lecture itself you can solve few questions like question number 2, calculate elasticity demand and elasticity supply at equilibrium price for the given demand and supply function. ये easy है. डिमांड और सप्लाई फंक्शन आपको गिवन है और यहाँ से आपको इलास्टिसिटी डिमांड और इलास्टिसिटी सप्लाई कैलकुलेट करना है. तो अब व्हाट यू विल डू, डिमांड सप्लाई इक्वेट करेंगे तो प्राइस आ जाएगा. मतलब पी और क्यू की वैल्यू तो मालूम है, इलास्टिसिटी निकालने के लिए डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू करना होगा, और इलास्टिसिटी सप्लाई के लिए भी वही काम करना है. बट डिमांड में डिमांड फंक्शन डिफ्रेंशिएट करेंगे, सप्लाई में सप्लाई फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे. सो इट इज़ गिवन एज 80 माइनस 6p और सप्लाई फंक्शन गिवन है माइनस 10 प्लस 3p. आई विल जस्ट सॉल्व फॉर वन. 80 माइनस 6p, तो आप यहाँ से इक्वेट करके पहले कैलकुलेशन कर लो. क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, सो दैट विल बी 80 माइनस 6p इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 3p. ठीक है, ये गिवन है. 80 माइनस 6p इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3p, माइनस 10. ठीक है, तो दिस वैल्यू विल बिकम 6p को राइट साइड कर दीजिए, वो 9p हो गया, एंड दिस इज 90. 90 इज इक्वल टू 9p, p इक्वल टू 90 will be equal to, this is 9p is equal to 90, so price will be equal to 10. प्राइस 10 हो गया और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्राइस अगर 10 हो गया तो
प्राइस अगर आप 10 लिख दो यहाँ पे प्राइस की जगह, तो 6 इंटू 10 60, प्राइस क्वांटिटी विल बी 20, और यहाँ पे अगर आप 10 लिख देते हैं तो ये 30 माइनस 20 20, ठीक है। तो क्वांटिटी विल बी 20, प्राइस 10 और क्वांटिटी इज 20, ठीक है। मैं इसे फ्रेम पे सॉल्व कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन सी इट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे तो माइनस साइन डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, मतलब पहले क्या करना है आपको, मार्केट इक्विलिब्रियम निकाल देना है, डिमांड सप्लाई इक्वेट करके वहाँ से प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू आ गई। अब इलास्टिसिटी निकालने के लिए डी क्यू बाई डी पी करेंगे इंटू पी बाई क्यू। सो माइनस साइन व्हाट इज डी पी, डी क्यू बाई डी पी। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो, 80 माइनस 6p को p के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफ्रेंशिएट, सो इट विल बी माइनस 6 एंड प्राइस एंड क्वांटिटी इज 10 बाई 20, ठीक है। तो 10 बाई 20, सो इट विल बी 60 बाई 20, 60 बाई 20, इलास्टिसिटी 3 है। इलास्टिसिटी और डिमांड इन दिस केस विल बी 3, और अगर आप इलास्टिसिटी सप्लाई निकाल रहे हो तो फिर सप्लाई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो 3 रह जाएगा इंटू पी बाई क्यू, और इलास्टिसिटी सप्लाई में माइनस साइन ऐड नहीं करना। तो दिस वन इजी क्वेश्चन। द अदर क्वेश्चन वी कैन सॉल्व फ्रॉम दिस इज थर्ड ए। यहाँ पे कह रहे हैं द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर एप्पल इज गिवन एज क्यू डी इज इक्वल टू 170 माइनस 2p एंड QS is equal to minus 10 plus P. Calculate the price and quantity of apple, and if government pass a law that introduces as statutory minimum price वाला question we can solve when we can explain chapter number 6 control on price. So you can see this one, you will find हर question के अंदर जो पहला वाला part है वो वैसे ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड गिवन है, तो नेक्स्ट फ्यू क्लास के अंदर वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक टैक्स वाला क्वेश्चन ये 4th है। सो डिमांड फंक्शन इज गिवन एज 200 माइनस p एंड सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज 3p। कैलकुलेट द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ टेबल। सपोज अ टैक्स ऑफ 40 इज प्लेस्ड ऑन बायर, अ टैक्स ऑफ 40 इज प्लेस्ड ऑन बायर। सॉल्व फॉर द न्यू इक्विलिब्रियम, व्हाट हैपेंस टू द प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर, प्राइस पेड बाय द बायर, क्वांटिटी सोल्ड, calculate the dead weight loss. The complete question we can solve it. So just solve this question. Demand function at 2p minus 200 minus p, supply is 3p और tax है 40. 200 minus p, 200 minus p is quantity demanded and quantity supplied is was 3p और tax is 40. and tax size of 40 per unit, ठीक है। इस कैलकुलेशन मिस्टेक अगर आप नहीं करो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है। फर्स्ट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स में क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, 200 माइनस p इज इक्वल टू 3p, सो 4p विल बी इक्वल टू 200, प्राइस विल बी इक्वल टू 50 एंड क्वांटिटी विल बी इक्वल टू 150, ठीक है। ये तो इजी बिफोर टैक्स वाला पार्ट हो गया। आफ्टर टैक्स व्हाट यू हैव टू डू, टैक्स वाज इम्पोज ऑन बायर, सो चेंज द डिमांड फंक्शन, और डिमांड फंक्शन में क्या करना है, 200 माइनस p में आप p प्लस 40 कर देंगे। सो सॉल्व फॉर आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम 200 माइनस p, ओरिजिनली गिवन है, इसमें 40 ऐड कर लो एंड देन अगेन फाइंड द मार्केट इक्विलिब्रियम। So when you calculate market equilibrium, then again demand equal to supply
200 minus P plus 40 equal to 3P. So this is 200 minus P minus 40 equal to 3P. So 4P is equal to 160. Price will be equal to 40. Original price 50 आ रहा था, ये number 40 है, that means this is price for seller. This is the price for seller. And therefore what is price for the buyer? Seller के price में tax का size add कर देना, which is 40. तो 40 plus 40, this will become 80. बायर के लिए प्राइस हो जाएगा 80, सेलर के लिए प्राइस है 40, दोनों के बीच का गैप 40 का, विच इज टैक्स साइज. एंड हाउ टू फाइंड क्वांटिटी? एंड देयरफॉर यू कैन, अगेन आई सेड, क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम सप्लाई और डिमांड कर्व. सो इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट फ्रॉम द सप्लाई कर्व इज गिवन एज 3P. तो सप्लाई कर्व से अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेलर का प्राइस लेना है, तो प्राइस की जगह 40 लिखना है, 3 into 40. That will be 120. टैक्स से पहले इट वाज 150. फाइंड करके प्रेफरेबली इसको अगर आप ग्राफ में दिखा दो तो दैट विल बी बेटर. दैट मीन्स वो ड्रॉ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व. इंटरसेप्ट 200 और 200 का है. क्वांटिटी सप्लाइड वाज 3P स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. This price was 50 and quantity was 150, and when tax is imposed, tax का size 40 है. This is supply after tax. या आप ड्रॉ नहीं भी अगर करते हो तो टैक्स साइज का सिर्फ आप वहाँ पे गैप दिखा सकते हो, मतलब 40 का गैप यहाँ पे क्रिएट कर लेना. सेलर के लिए प्राइस आया था 40, बाहर का प्राइस हुआ 80, और क्वांटिटी आफ्टर टैक्स वाज 120. यहाँ तक प्लॉट कर दिया. प्लॉट करने से क्या होता है, नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस एरिया डेड वेट लॉस. तो यू कैन कैलकुलेट दैट एरिया ऑफ डेड वेट लॉस विच इज दैट ट्रायंगल. आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेड वेट लॉस, बट जहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वहाँ पे बस वो एरिया कैलकुलेट कर देना. सो इट इज़ हाफ इंटू टैक्स साइज, हाफ इंटू बेस. बेस ये टैक्स साइज हो जाएगा विच इज़ 40, एंड height will be this quantity का change 150 और 120, this is 30. So this will be 1200 by 2, 600. Dead weight loss of 600. तो ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में आपको वहाँ मिलेंगे पेपर के अंदर. एंड जस्ट आई हैव शोन इन एवरी क्वेश्चन 2A, 3A, 4A, जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, हर क्वेश्चन का अंदर फर्स्ट जो पार्ट होता है वो कैलकुलेशन वाले हैं. You will be having question from the numerical approach in every question. There will be an application side of it, and there will be a theoretical part as well. So in this orientation lecture we have just explained what will be the approach. Okay, so what is going to be the approach for this paper? So in this section, introductory micro, remember in semester 1 you are studying introductory micro, in semester 2 it will become introductory macro, but from semester 3 and 4 both it will become intermediate, और फिर micro और macro एक साथ होंगे, मतलब intermediate micro 1, intermediate macro 1 in semester 3, and then intermediate macro 2 and micro 2 in semester 4. So first year is basically introductory, second year is intermediate, third year it becomes advanced. So you have to continue that micro and macro throughout the graduation. So again at the end we can repeat that content के accordingly there are 4 units, but out of those 4 units the second unit and third unit is the most important one. So we have started with unit number 2 and 3. Unit number 2 and 3 means chapter number 4 to chapter number 11. So we will complete that section first, and then we can cover the first unit and the last one. So in that we have done in this lecture some part of this chapter number 5 also, and some part of chapter number 8 also, and few things from chapter number 7 as well. ठीक है, but chapter की heading नहीं डालनी है. We have done the basic concept of elasticity. What do you mean by elasticity? Elaboration will come when we explain the various types of elasticity, and how to calculate elasticity given any demand function you can calculate it now,
and given any demand and supply function, if tax is imposed, then we can explain the application of that elasticity as well. The burden on buyer and seller will always vary in the proportion of elasticity of supply and elasticity demand. तो आज की क्लास का जो मेन कंटेंट है इन शॉर्ट वही है, इसको आपको याद रखना. द बर्डन ऑन बायर एंड सेलर विल बी इन द रेशियो ऑफ elasticity of supply and elasticity demand. So you can explain it. So everything will be whatever is dictated here also or solved here, वो आपको ई बुक की कैटेगरी में नोट्स पे मिलेगा. मतलब नोट्स में वो डिटेल होगा. दैट मीन्स इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट थियोरेटिकली हाउ टू एक्सप्लेन इट, सो यू विल बी गेटिंग दैट notes as well, but you have to always supplement the notes with the class. And then चैप्टर के एंड में जो रीडिंग के एंड में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैनक्यू वाले वो एक साथ सेग्रीगेट किए गए और you will be getting the past year question also and the solution part. Majority of question will be getting the solution. We will try to solve this question in the every day lecture as well. Like, it will not be that we will first of all explain complete reading and then we start the past year question. Past year question is basically done in the every lecture. तो इस क्लास के अंदर आपने लास्ट ईयर के दो जो क्वेश्चन थे वो कर लिए, तो it will go on. That means it will be included in your lecture itself. Clear? So we'll continue with this in the formal lecture. That means about we can say the content is not very wide, but about 20 to 25 lecture will be good enough to complete the introductory micro semester 1 lectures. ठीक है? Thank you.